Good day, everyone. For the past 5 days and before that also, I am from Kolkata. My name is Antariksh Datta. I am a Merchant Navy officer by profession, and I am here into all this course due to my passion in astrology and Vastu, be it modern Vastu or Astro Vastu. So I have been doing these courses conducted by Mr. Paresh Goshar. He's an Astro Vastu consultant and a Geo Vastu consultant. The reason I have been repeating the courses and doing various courses conducted by him was that when I did the first Astro Vastu course, I was so amazed by the clarity of his teachings, which compelled me to do more courses conducted by him so that I can refresh my existing knowledge of Vastu. And in 90% case, I refreshed as well as I gained more knowledges. So I request everyone who is more passionate about this astrology and Vastu to attend the courses and refresh their knowledge and be a better consultant and do their profession more diligently and efficiently. Thank you. Thank you, Antariksh Dattaji. Thank you for the bottom of my heart. It was good one. Yes, hello. Sir. I'm architect Manish Rangnekar. I'm the 1985 batch of JJ College of Architecture and I've been in practice now since over 30 years. Astrology was a very difficult subject even to understand, but what Paresh Bhai did in the Astro Vastu course was fantastic, and a lot of things came up to light. Also followed by the modern Vastu, a new dimension has opened up as a professional architect as well as an individual, and I cannot thank him enough. He's done a fantastic job. I have been a professor for the last almost 28 years, and one thing which I found about Paresh Bhai was that he openly teaches. He doesn't hold back anything. That is a very good point which all teachers should have, and I'm indebted to him for sharing his knowledge and information. Thank you. Thank you, Manish. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Yeah, myself Amar Patil, and I'm also an architect based in Kalyan. So, as an architect, this was a boon to me. Like in last many of the works, it was been compiled by many astrologers, you may say, or Vastu consultants to do some specific work in the zonal factor of the direction and their attributes. But here, as an architect, we are blessed by Paresh sir to design in whatever manner, in whatever freestyle we can, because these particular courses have some benefits of doing the remedies in their own ways, which anyone needs to take lessons from him. And he is a universal, very good teacher. And we are all blessed to have him as a teacher. And he will be our teacher for this life. And thank you so much. Thank you, Amarji. Thank you, sir. Thank you very much. You have always been from the very first day of initial phone call. I don't know, it was some muhurata on its own. That things, I know, just moving, sir. Thank you very much, sir. And looking forward, a lot of things that we have planned, like Manishji and you both together, bringing all architects together, and we have planned something. I think this will help. You can understand. Okay? Now you will not be a prey to some fixed norms of Vastu Shastra. Exactly. And you can do your work more creatively. And your clients, your customers, that's what I'm saying. It's a boon benefit. to your studies and your not prediction, but your studies had been boon to the architecture for designing sense, because every time you were compelled. Yeah. And even in my practice, whoever has worked with me, I don't think anyone has told like a traditional thing somewhere, because now I cannot be creative in my work. तो मेरा काम नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं बोला, नहीं, तो आपने हमको बता दिया, and you have left us, you have given us the required choices. That is how I have been working with the interior people, architect peoples, and then they have took that, and also then they have referred. Of course, then that client may not take me as a consultant because they have their own is a different but they have referred. Referred means why? Because for them that creativity was not lost in working with me. That was is the not main lost. concern. That is the main concern. Yes. If anyone wants to work with you under your guidance, practically taking up, you give such an opportunities to those persons. Yeah, one can plan. Why not? I can plan.
like franchises, we can go ahead with that, or like if everyone who was already wants to practice with us, he should be first of all aware about the entire subject thoroughly. He has to do this required work, and then of course we can plan. So what he can do is we will work out something what needs to be understood first. I need to write down that, and then of course that can be planned, sir. Why not? Otherwise, sir, for newcomers like us, it will be very hard without any practical guidance. Why, sir? We have to make this subject so easy with for everyone. People have to look. Okay, nahi, why should I see anyhow? I give you a small example. In any city in India, minimum you go to buy a normal place of 1 BHK. I don't think it will be below 1 CR. And Yes. forget about lower second or third grade. It may be say minimum 50 lakhs. Yes. And 50 lakhs any minimum. person buying say a 50 lakh house, he may spend at least say 3, 4, 5 lakhs in his interior minimum. And forget about big houses and spending 1 CR in interiors. Say 4, 5 lakh, 10 lakh rupees easily goes into interior. Yeah. And if everything you are putting that efforts of 55, 60 lakhs minimum, or 2, 3, 4, 5, say 10 crores, and if you add a knowledge of Vastu Shastra, modern Vastu, Astro Vastu altogether, how much extra you going to pay? Tell me, sir. If you are calling me, forget about anyone else. How much extra you are going to pay? It may be 30, 40,000, 50,000. Max to max, it may be 1 lakh. How much more it will be? No. That would be 0.5%, 0.25, 0.25 or 0.5 also, or not more of the exact value. But what you are going to gain from that? You Life changing. Give me an example. Life changing, some experience. Because of past good karmas, knowingly, unknowingly, we get things. But also God has given us choices. Somewhere down the line, you can have a choice of getting a good consultant and redesigning your space and getting the benefit. Yes or no? Yeah, definitely. Yes. And creative. From first day I'm telling, we have to change the way astrology is practiced. We have to change the way Vastu Shastra is practiced. And that is my statement. And then slowly and steadily, as people grow, people learn through us, and they will practice. Over a period it will come, and everyone will understand then. Not immediately. As we are saying in astrology, why we want tantra, mantra, and gemstones everywhere? Where it is required, you use for, but for every person, it is not required. By putting some color on body, we can get result. By wearing a color thread in the hand, we can get result. By putting an object in one particular direction, we can get result. And that object or item is from our house only, or from the grocery itself. Why you want? But of course, we have studied, we have spent time. So value we will take, but we will give you a good result. Or we don't guarantee result, of course. But the way the remedy can be applied, you can see the variety. That everyone will agree. Same thing with Vastu also. So it opens up so many varieties, sir. So many varieties. Yes, sir. Anyone else, sir? Naresh ji, Raghu ji. Yes, sir. Please come ahead. Yes, sir. हाँ सर, बताइए सर. मैं नरेश वाघ मुंबई से हूँ. 2015 से वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. फिर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, फिर थोड़ा एस्ट्रो वास्तु में इंटरेस्ट हुआ, लेकिन अभी तक मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. मैं कुछ मेरे वास्तु का जो प्लान है उसमें मेरे साथ अभी तक जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था. वास्तु से हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी से हो रहा है, मेरे साथ एक क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो अभी तक कुछ आंसर नहीं मिल रहे थे. लेकिन परेश सर से मैं एस्ट्रो वास्तु किया, फिर मॉडर्न वास्तु भी किया, तो 1 वीक से मैं उसमें ही फोकस कर रहा हूँ कि ये साल में मेरे साथ बुरा क्यों हुआ था, मुझे प्रॉब्लम क्यों आई थी. 96 में मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था, वो क्यों आया था. तो कुछ ना कुछ मुझे एस्ट्रो वास्तु से, एस्ट्रो से, नेगेटिव हिट से, पॉजिटिव हिट से मुझे वो समझ में आ गया. मुझे वो क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया सर. तो बहुत बढ़िया था कोर्स, एस्ट्रो वास्तु का भी और मॉडर्न वास्तु का भी.
कुछ कनेक्ट कर पाए सर कि क्यों हुआ था, और आगे मतलब मेरे साथ बुरा मतलब ना हो तो मैं क्या करूँ एस्ट्रो वास्तु से या वास्तु से। तो मैं कुछ मतलब मेरी या मेरी फैमिली या मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है उसकी मैं कुछ हेल्प कर सकूंगा सर। प्रोफेशनली तो जो करना है वो तो करूंगा ही सर। और आपने तो 2-3 रिव्यू दिए हैं हमको ऑलरेडी, बहुत बहुत सर, है ना। बहुत व्हाइट मतलब कलर का धागा पहन लिया, कहीं पे चेस्ट पे कलर कर दिया। यस यस सर, सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले सर, सर बहुत बढ़िया वो रिजल्ट मिले दोनों केस में क्या क्या आए, आपको क्या पता सर। चला? पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिले। चेस्ट में ग्रे कलर किया, राहु को वहां पे प्लेस किया हाँ चेस्ट पे। हाँ। तो जो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम था सर 24 घंटे के अंदर ही वो मतलब क्योर हो गया सर। अभी राहु जैसा नेगेटिव प्लेनेट को उन्होंने चेस्ट पे ले लिया सर, सुनिए बात को, और वो बोल रहे हैं कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, टेनिस एल्बो निकल गया, एंड ही डिड नॉट हैव टू टेक अ मेडिसिन, और आई थिंक सर सो। और सर वो उसके लिए मतलब बहुत से मतलब मेडिसिन करवाए हैं, बहुत से डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन डॉक्टर ने इतना ही बताया मुझे कि भाई ये सचिन तेंदुलकर को भी ये टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम था, इसके लिए कोई इलाज नहीं है, ये हाथ से कुछ ज्यादा काम ना करो, मेडिसिन लो बस। इसके लिए कोई मतलब परमानेंट इलाज नहीं है इसके लिए। तो मैं पहले दिन बोलता था कि हमको मिराकुलस रिजल्ट मिले हैं, तो यही चीजें थी जो हमने भी कहीं ऑब्जर्व की, पर हमने ज्यादा कभी डिस्कस नहीं किया, ज्यादा नहीं आपको बताए, क्योंकि हमारे पास जैसे कोर्स आपको मालूम है कि वी हैव जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन स्टार्टेड दिस कोर्सेज, तो वी डिड नॉट रिव्यूज, एंड आई नेवर टेक रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम एनी पीपल और माय क्लाइंट्स बिकॉज आई डिडंट नो, आई डोंट वांट इट, but because now for the reference of other people to understand, we have started to take reviews through these classes or courses, and नरेश जी एंड एवरीवन, यू नो, जो उन्होंने शेयर किया है, इससे लोगों को अभी बेनिफिट मिलने वाला है और मिलेगा टू अंडरस्टैंड कि वाकई में यू नो हाउ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कीपिंग स्टूडेंट इन माइंड, यू नो हाउ वी हैव डिजाइन and how much now it is benefiting all of us. Everyone will agree to that, I think. थैंक यू सर। Thank you, Naresh ji. Thank you very much. Thank you. सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर द रिव्यू बताइए आएगा। सर, बताइए। सो पर्टिकुलर इवेंट्स का कोई बंदा अगर आता है कोई प्रॉब्लम लेके, जैसे हाँ। मेरे को जॉब या शादी नहीं हो रहा है या चाइल्ड बर्थ, हाँ। तो सर जो आपने दिया था ना ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस, यस। 2 5 11 2 हाँ। 7 11 जैसे, हाँ। वो हाउसेस रिलेटेड हम लोग हिट बनाएंगे ना, हाँ। तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, करेक्ट? Yes, yes. And you will understand more about events, when they happen, and the grouping of houses for many things of your life. When we do a KP astrology class, which is coming shortly, so we'll send you the details. So our fourth component, जो हमारा 4 core fundamental courses, what we are talking about, 3 we have already aligned, and we will be running our third batches now very shortly. But already designing part of KP astrology course is also going on. So shortly, once it is ready, we will also send you details. So whoever wants to join, they can join. So they will complete the 4 components what we are talking. So the fourth leg, when it comes, you will understand that you can run properly, that your car will run properly. But not compulsory or necessary for everyone. But anytime if everyone still does, you know, even though you don't want to practice astrology, but for only self, if you want to understand a lot of things, the fourth component that we are going to launch shortly, KP astrology classes, full-blown classes it will be. It will help. Forget about knowing too much about astrology. You open your chart, like how you open your now Astro Vastu, and you understand same way, step-by-step approach. Even though people don't know KP astrology, even 1A or B of that, we will take care that you at the end, like Astro Vastu, now as you can openly discuss, you will be able to openly discuss KP astrology after we complete the sessions what we are planning, and that course will not be every day. We will keep weekly once or twice only, so that you get enough time to practice, absorb, understand, see other people's chart and study. So it will be step by step. Even if lockdown continues, still it will not be every day, or even if lockdown is not there, it will not be every day. Weekly once or twice, depending upon the batch and the group of people that we will be having, and we will plan the timings also accordingly, so that everyone is able to attend the courses. They don't, not only the through recordings they will learn, but actual life we want people to come. Yeah, so it will be 7 to 9, 8 to 10, something like that we will plan. So yes, anyone else that Raj Patil ji,
Manish, then Raghuji, if you want to give us review, everyone has to give anything positive, negative, sir. We welcome everything, sir. Raghuji, we are not able to hear, sir. Can you speak loudly, sir? Can you come live on video, sir? Raghuji? Hello? Hello, sir. Yeah, tell me, sir. Yes, sir. Yes. Please go ahead, sir. Yes, sir. So, I'm very happy. So, you have so many knowledge about this. I attended so many classes, but this type of knowledge no one is given. Which class means related to this subject you have anywhere attended or different subjects? No, this subject. So okay, so what you have done? Astrology or Vastu? You mixing with Astro Vastu. Now I am going to learn that also. Okay. It is very helpful for me. Okay. And this element wise also, I am totally understood that one. Elements wise. You have understood clearly. Very neatly, yeah. Okay. Then we have to Astro Vastu, you have to apply and how to get the directions and all. That is very good actually. So then once you complete our Astro Vastu course also, Modern Vastu you have done today, and then Lecker Antenna also I think you have done. Yeah. So now 3 components will be ready in few days with you. Okay. So you may little start to fly, and after some days you will have your own helicopter or aeroplane to fly. Once you basically know the subject properly, thoroughly first of all. Yes. And then you can understand then. Yes. And you can understand everyone is talking, so they are not talking like that. Even though, in 15 days I think, not more, they started with Noven in Vastu, Noven in astrology. In 15 days, we have made sure, we have tried our best and made sure, and then everyone is able to discuss astrological chart. They know the Lagnas, they know where each Rashi is placed in their house by way of directions. They now know where they are sitting and how good their directions are, knowingly, unknowingly. Okay. And already they are going to now send us the case studies. They will study each and every person of their house. They will be sending us the details in few days or few weeks time. So you can understand, means if that is done, they have understood the subject very clearly. Yes. Okay, thank you very much, sir. And thank you very much, sir. Thank you very much. Mr. Patil ji, Amar Patil ji also. Amar Patil ji. Everyone has his name on his on their mouth, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Sadanand ji, Raj Patil ji. Yes, sir. बताइए. सर, माझं नाव सदानंद गवडे, मी नाशिक मधून आहे. ओके. मी आर्किटेक्टची प्रॅक्टिस करतोय का आर्किटेक्टकडे. ओके. याच्या आधी मी काही म्हणजे मला क्लास जॉईन करायचा होता एकाकडे, म्हणजे तेच ऑनलाईन पाहतो मी, पण मला म्हणजे 1-2 ठिकाणी मी इन्क्वायरी केल्या. नेमकं तुम्ही ते लेकर अँटेनाचं नाही का, तेव्हा आपली ओळख झाली. मी तुमची 2-3 महिन्याआधी युट्यूबला सबस्क्राईब केलं होतं. अच्छा, तुम्ही केलेलं आहे. थँक्यू फॉर दॅट की आपने सबस्क्राईब किया. थँक्यू. त्याच्यामुळे मला ते लेकर अँटेनाचं समजलं. त्याच्यानंतर मी आता ऍस्ट्रो वास्तूचा पण केला. तुम्ही ज्या प्रकारे शिकवता एकदम भारी सर, एकदम आवडलं. ओके. तर चान्स आहे आम्हाला की तुम्ही रेकमेंड करणार पुढे नाशिक मध्ये, पुणे मध्ये वगैरे पुरा महाराष्ट्रामध्ये. हो सर, नक्कीच. आणि नक्की तुमच्याकडून आम्हाला तुमचे फ्रेंड्स किंवा कन्सल्टंट्स येणार आमच्याकडे. सर नक्की. ते कसं आहे, आता मी माझ्या मित्रांना सांगितलं ना, मित्र जास्त असे विश्वास नाही ठेवणार त्याच्यावर, तरी मी कन्व्हिन्स करेल त्यांना. नाही, कन्व्हिन्स करायचीच नाही, तुम्ही प्रॅक्टिस करून त्यांना दाखवा. ते स्वतःहून आले पाहिजे. आपल्याला फोर्स कोणाला नाही करायचा आहे. फोर्स नाही, त्यांना तुम्ही नुसतं रेफरन्स द्या. तुम्ही तुमच्या काम करून त्यांना दाखवा, त्यांना समजायला द्या. असं काय ना की उद्या कोण आला पाहिजे, तुमच्या काम त्यांना वाटला पाहिजे, मग ते स्वतःहून येणार. ते इम्पॉर्टंट आहे आमच्यासाठी सर. बरोबर आहे. चालेल सर, नक्कीच. आणि कोण तुम्हाला असा भेटला या फील्डचा माणूस जो ऑलरेडी ऍस्ट्रॉलॉजी त्याला माहित आहे, वास्तू माहित आहे, त्याला सांगा की आमच्या युट्यूब वरती, फेसबुक वरती काहीतरी बघायला आणि काहीतरी शिकायला तिकडून, आणि मग कधीतरी आम्हाला कॉल करून आमच्याकडून थोडं ज्ञान घ्यायला आम्ही फ्री पण देतो थोडा. आणि बाकी पेड मध्ये तर सर ते उडायला पण लागणार मग हळूहळू. हो सर, नक्कीच. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू वेरी मच सदानंद जी. यस सर. या आइए राज पाटिल जी, बताइए सर.
हाँ, हेलो सर, हरिओम। हरिओम सर। सर अभी ये जो मॉडर्न वास्तु का कोर्स हुआ है 5 दिनों का, हाँ। तो इसमें राइट नाउ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें हूँ, सिचुएशन में हूँ, क्योंकि एक्चुअली इंटरेस्टिंग वर्ड का मैं डिसाइफर करूँ तो वही जो हमने जिस वर्ड को एक दूसरा नाम दिया है इंटरेस्टिंग करके, थोड़ा कंफ्यूजन, इसको इंटरेस्टिंग हम बोल रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि क्या मॉडर्न वास्तु का अभी कोर्स हुआ है, तो अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं समझ लूंगा, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। जो मेरे भाई है, जैसे अमर हुआ, नरेश हुआ, मनीष जी हुए, बाकी सभी जो मान्यवर है, तो उनका क्या है, उन्होंने कुछ एस्ट्रो का टच लेके आए हैं, जो आप ही से उन्होंने सीखा है 4 दिन पहले या लास्ट वीक तक उनका कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे डिस्कशन उस तरीके से भी हुए हैं। तो अभी जब मेरा वास्तु ये एस्ट्रो का कंप्लीट होगा कोर्स, उसके बाद फिर वो टाइम पे मैं आपको एक अच्छा ये दे सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लूं, समझ लूं, क्योंकि और आप तो एक साथ में 2 कोर्स अटेंड करें, सुबह को मॉडर्न वास्तु और शाम को एस्ट्रो वास्तु, तो थोड़ा ज्यादा आपके पास है ना प्रेशर है काम का, होमवर्क को लेके। लेकिन इसका फायदा भी हो रहा है सर, फायदा भी हो रहा है। फायदा ये है कि अभी ये जो मॉडर्न वास्तु का है, तो अभी जो क्लासिक वास्तु में इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वो कंपार्टमेंट आपको अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी कैसे उसका जो अटैचमेंट है, और ये जो कुछ नया है, जैसे एलिमेंट 5 तत्व, उसमें भी 5 तत्व ही काम करते हैं, तो एयर हुआ, वुड हुआ, तो इसकी जो दिशावार भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, राइट। तो अभी क्या है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके फिर उसको जब मैं थोड़ा समझूंगा, मतलब जैसे अभी थोड़ा डिस्कशन भी करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा पेपर वर्क भी करूंगा क्या है, क्योंकि मेरे घर का भी चार्ट मैंने भेजा था। तो उसके बाद में जैसे ये एस्ट्रो भी कंप्लीट हो रहा है, तो ये थोड़ा 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 ये जो कंप्लीट हो जाएगा वर्क, तो एट द एंड ऑफ द एस्ट्रो वास्तु मैं कुछ बोल पाऊंगा सर इसके बारे में, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु जहां तक मैंने अभी आपका डिस्कशन सुना सभी का, एस्ट्रो वास्तु इज मोस्टली कनेक्टेड टू मॉडर्न वास्तु। और इसमें कैसे, मॉडर्न वास्तु में कुछ भी चेंज करने के पहले अगर एस्ट्रो वास्तु का भी थोड़ा सा टच हुआ आदमी को, तो एकदम अच्छे कैलकुलेशन में सामने वाले को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो थोड़ा मैं वेट करके फिर इसके बारे में बताऊंगा सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो मेरे ख्याल से एवरीवन हैज गिवन गुड रिव्यूज। आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़े और रिव्यूज भी, पर ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है ना, तो इससे बेनिफिट होगा सबको। सो थैंक यू एवरीवन, सो नाउ